The topic that we have for today is covalent bonding. This is the third kind of bonding, and this is where atoms share electrons. So remember the idea that there are three kinds of particles. One is atom, one is molecule, one is ion. So we've talked about how atoms can make ions. And we've talked about how atoms can make molecules. This is it. Atoms के molecules कैसे बनते हैं? The key difference between ions and molecule is कि a molecule के ऊपर charge usually नहीं होता और ions हमेशा charged होते हैं. अब वो बनता कैसे? The key idea is in the name. Co means sharing. Valent means in the last shell. So होता क्या है कि there is sharing of electrons, and not just electron pairs in last shell. And that is what this bonding is, or how it is made. But देखें बात बड़ी सिंपल सी है. बॉन्डिंग का मतलब है force of attraction. इस पूरी definition में कहीं force of attraction की बात ही नहीं हुई. So this definition is not correct. There is more detail required. और मैंने आपसे बताया था that whenever you have to define any bonding, you have to specify three things. First of all, you have to talk about the force of attraction. Second, you have to talk about one positive thing and one negative thing, because उनके बीच में bonding होगी. Neutral चीजें एक दूसरे को attract नहीं करती. The bonding is always between something positive and something negative. So, what can we write here? Can you tell me what is the negative part in a covalent bond? What's the negative part in a covalent bond? It's the electrons, right? And what's the positive part? That's a little tricky thing. So let me define it. Covalent bond is the strong force of attraction between shared pairs of electrons. ये हमारी negative part हो गया. And two nuclei. Your nucleuses. This is my negative part. This is my positive part. They will attract each other. And this attraction is covalent bond. Remember this. Covalent bond, दो atoms के बीच में जो electron share हुए हैं उनमें और उन दोनों atoms के nucleuses के बीच में होती है. And why does it happen? Because the third strategy that atoms have, that they want to share electrons, takes into account कि वो share करके noble gas configuration ले सकते हैं. There is a word that we throw around a lot कि वो stable हो सकता है. I would suggest you don't use the word stable. हाँ कर लें, कोई गलती नहीं है उसमें. But a better word would be that they are like noble gases, noble gas configuration. Through covalent bond, they can achieve that. So let me take a very simple example of hydrogen. Hydrogen का atom इस तरह से मैं बना सकता. Notice two things. Number one, I did not make a circle for nucleus. क्यों? Examiner उसको समझ सकता है कि आपने शायद शेल खाली बना दिया. हम क्यों रिस्क लें? हमने एक शेल बनाया है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया. We don't need to draw the nucleus. Just saying this is hydrogen is good enough. हमने उसकी symbol वहां पे लिख दिया. And I have another hydrogen. Let me bring that in. And this hydrogen I will show the electron with a cross. There are three symbols that examiner will accept: a circle, a filled circle, and a cross. इन तीनों के अलावा कोई और सिंबल आपने इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए यूज नहीं करनी. These are the three allowed symbols. We call it a dot and cross diagram. ये भी एटम है, वो भी एटम है. इस एटम को नोबल गैस बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. क्यों? इसके नियरेस्ट नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में इज हीलियम, और हीलियम के पास दो होते हैं. तो ये हीलियम को इमिटेट करना चाहता है. It wants to get one more electron so that it's like helium in the configuration. उसकी प्रॉपर्टीज हीलियम वाली नहीं होंगी, बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम वाली हो जाएगी. So to do that, what it can do is कि या तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो उससे जीरो हो जाएगा, परफेक्ट, या वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, वो भी अवेलेबल नहीं है. The third strategy is कि this will simply share electron. तो share कैसे करते हैं?
कि they overlap. Remember, all covalent bond is overlap. पहले उसका इलेक्ट्रॉन इस पूरे एरिया में घूम रहा है ना, वो यहां पर कहीं पे भी हो सकता है उसका इलेक्ट्रॉन, वो घूम रहा है उसके इर्द गिर्द। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे घूम रहा है। हाँ, ये शेल की बाउंड्री हमने इस तरह से बनाई कि अच्छा यहां तक हमें वो 90% टाइम ये इस एरिया में मिलेगा इलेक्ट्रॉन। इसको ऑप्शन है इसके पास कि थोड़ा सा एरिया ओवरलैप कर ले। अब उससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, सॉरी, अब पहले वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे एरिया में था, अब उस इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियस पुल कर रहे हैं। सो ये वाला न्यूक्लियस भी पुल कर रहा है, ये वाला भी पुल कर रहा है। फॉर अ मोमेंट जस्ट फोकस ऑन दिस एटम। इस एटम के शेल में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, तो इसको लगता है कि मैं नोबल गैस की तरह हो गया हूं। सिमिलरली फोकस ऑन दिस एटम अलोन, उसके शेल में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, तो उसको भी लगता है कि मैं नोबल गैस हीलियम की तरह का हो गया हूं। एंड in reality, both these electrons are being shared in the area between them now. अब वो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, लेकिन वो इन दोनों में शेयर्ड हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन पुल कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है, और ये जो स्ट्रॉन्ग पुल है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. This is keeping these hydrogens connected to this shared pair of electron. Acha, one important thing to remember, it is about the pairs of electrons. It is not about कि वो pair कहाँ से आता है. That's a very important idea. Please remember, they will share electrons and that's all they care about. They don't care कि electron कहाँ से आ रहा है. Okay? So I'll give you an example in a while कि there are cases जहाँ पे बहुत weird चीजें होती हैं, but वो covalent bond होती है. अभी हम देखते हैं. Let's continue with this idea. So basically I have a hydrogen. It has shared one pair of electron with this hydrogen, and this I can write with one straight line. This thing on the left is called dot and cross diagram. And this thing on the right, इसके multiple नाम्स हैं. इसको Kekulé structure भी बोलते हैं, इसको लुई डायग्राम भी बोलते हैं, इसको लुई डॉट डायग्राम भी बोलते हैं. बेसिकली आप इसको कुछ भी नाम दो, यू जस्ट नीड टू नो कि जो एक लाइन है वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ a really big molecule for you. Let me explain what a molecule is. Molecule is group of atoms covalently bonded. हर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होगी और एटम्स आपस में ज्वाइन हुए होंगे. अच्छा, समटाइम्स मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है, हो सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि चार्ज कहां से आ गया. हो सकता है मॉलिक्यूल पे चार्ज, बस उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी जरूरी है. इनको दोनों को हम लिखेंगे H2. द टू हेयर इज टेलिंग मी दैट देयर आर टू एटम्स. एक ये एटम है and this is one atom. So there are two atoms combined together to make this thing. Okay? Now, Gia's question is that how many electrons can atoms share? However many they need to make like noble gas structure. And there's no limit to how many they can share. अगर उनमें जगह है, वो वहां पे और इलेक्ट्रॉन घुसा सकते हैं. So let me give you a couple of other terms. पहली एक और टर्म जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और एक को हम बोलेंगे लोन पेयर. जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दोनों शेयर्ड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड पेयर. और अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स होते जो शेयर्ड ना हो रहे होते बट होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, they will be called lone pair. So what's a bond pair? These are valence electrons being shared. And what's a lone pair? It is valence electrons
not being shared. But this is valence electrons. Remember this. Acha. Total electrons in a molecule equals all proton numbers minus charge. किसी भी molecule पे अगर कोई charge है, तो you will include that. But overall, just count all the proton numbers. Let me give you an example. So अब आपको bond pair, lone pair और total electrons की समझ आ गई? Now let's do it. I'm going to make a really big molecule and I want you to focus on it because it's going to challenge your understanding a little bit. So here I have a molecule. This is one molecule. ये इसकी Louis diagram है. Can you tell me इसका formula क्या होगा? HSO4. So you will need to count every atom. So सबसे पहले मेरे पास 3 तरह के atom हैं. There is H, there is S, there is O. There are 2 hydrogens, 1 and 2. So मैं लिखूंगा H2. मैं 2H नहीं लिखूंगा. क्यों? 2 का मतलब है कि वो separated है. Small 2 का मतलब है उनमें आपस में bond है. S एक है. O, there are 4. 1, 2, 3, 4 O's. So I'll say H2SO4. How many bond pairs do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 bond pairs. So that means how many bonded electrons? 8 times 2, 16 electrons. Now let me calculate the total electrons. How many total electrons? मैंने आपसे कहा था all proton numbers minus charge. Does this molecule have a charge? No. 0 है. So we will add up all the electrons. So उसके लिए proton number चाहिए मुझे. हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16 होता है. So this is going to be 2 hydrogen, यानी कि 2 times 1 plus 4 times oxygen plus 1 times silicon, sulfur. And this is 50. So I have 50 total electrons. So अगर examiner हमसे पूछे that how many electrons are not involved in bonding, so what will we do? We will simply subtract them. So 50 minus 16, 34 electrons not involved in bonding. Does everybody understand this? Now here's the thing. Let's look at the lone pairs. Hydrogen के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया. Oxygen is in group 6. That means it has 6 electrons. उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया. So that means it's left with 4. We will put the 4 on the sides. Every oxygen has 6. If it is sharing 2, that means उसके पास 4 बाकी बचते हैं. So इसने भी 2 शेयर किए हैं, तो उसके पास भी 4 रहेंगे. 2 कैसे शेयर किए हैं? एक इधर, एक इधर. Similarly, this one is also shared 2, तो इसके पास भी ये बचे. Now here's an interesting idea. Sulfur had 6. Sulfur ने कितनी bonds बनाई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना. उसके पास 6 थे. 2 और लेता, काम खत्म. बट यहां पे उसने वो 6 के 6 शेयर कर दिए हैं. सल्फर के लास्ट शेल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके साथ वो शेयर्ड है? गो ऑन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज सल्फर शेयरिंग? आई विल हेल्प यू काउंट देम. 2, 4, 6, 8. 8 तक तो हमने देखा हुआ ना. 10, 12. सल्फर इज शेयरिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, सल्फर ने कितनी बॉन्ड्स बनाई हैं? 6 बॉन्ड्स. इस वजह से हम इसको बोलते हैं सल्फर 6 acid. And usually in noble gas, in many compounds, ये जो रोमन नंबर में होता है ये हमें बताता है कि उसमें कितने बॉन्ड्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है. आप ट्रांजिशन मेटल्स में भी इस चीज को देखोगे. कॉपर 2 ऑक्साइड, इसका मतलब है कि कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. कॉपर 1 ऑक्साइड मतलब उसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व. सो ये हम सोडियम के लिए कभी भी नहीं लिखेंगे. क्यों? बिकॉज सोडियम विल ऑलवेज हैव जस्ट 1, तो वो पीरियोडिक टेबल से पता लग जाएगा. बट इन एनीथिंग दैट हैज मोर देन 1 पॉसिबल नंबर, क्या मतलब कभी वो 1 करे, कभी वो 2 करे, कभी वो 4 करे, तो उन चीजों के लिए हम ये नंबर्स हमेशा लिखेंगे. दिस नंबर विल टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. So right now sulfur has 6 electrons involved in bonding, sharing 12 electrons in total, and that is perfectly fine. All the elements that are in period 3 or beyond can have more than 8. And there's nothing wrong with it. The key point is
क्या इस हाइड्रोजन के पास 2 हैं? बिल्कुल हैं। क्या इस ऑक्सीजन के पास 8 हैं? बिल्कुल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ऑल ऑफ देम आर हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर सल्फर को कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ओके, so this is how you can see the noble gas structures. Now there's another term that I want to introduce to you. This term is called diatomic. Diatomic means molecules with 2 atoms. That's it. Yes, sulfur does not have noble gas configuration here, but that's fine because it has more than that. So sulfur is pretty much satisfied. Molecules with 2 atoms, that's diatomic. So H2, O2, N2, all halogens. Periodic table में ना एक उल्टा L बनता है. So there's nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. They're all going to exist as N2O2, F2, Cl2, Br2. सब के सब इस तरह से हो जाते हैं. Okay, they're all diatomic. And then there are others. For example, carbon monoxide, nitrogen monoxide. ये भी 2 atoms आपस में join हुए हैं. So this is diatomic. Similarly, we also have triatomic. Triatomic would be molecules with 3 atoms. Usually exam में वो ये term use नहीं करता. So वो आपको MCQs में पूछ सकता है कि which of these has 3 atoms in it. ये उसके लिए आपको क्या देखना होगा? Just count all the atoms. जैसे यहाँ पर this is 1, this is 1. So total 2 हो गए. 1, 2. यहाँ पर भी you just count them. So CO2. 1 carbon, 2 oxygen, total 3. तो MCQs में वो आपसे पूछ सकता है कि how many, which of these has 5 atoms? इस तरह से करके. Similarly, NO2 या SO2 या H2O या H2S. These are all different gases or substances जैसे water है कि with 3 atoms. तो आपको ये term इतनी नहीं आएगी लेकिन you should be able to count the atoms in a molecule. जैसे यहाँ पे अगर मैं H2SO4 के molecules आपसे कहूँ तो there's going to be in this one molecule you have 2, 1, 4, 7 different atoms making it up. So sometimes in the exam they also talk about how many moles of atoms will you get from 1 mole of this. So that's really simple. You will get 2 plus 1 plus 4, 7 moles of atoms from this. Our next question is, could you explain how we got bonded electrons? Every one line will show 1 pair of electrons. Every line is 1 pair. So जब यहाँ पर 1 line है तो that is 1 pair. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो total 16 electrons bonded हैं. और lone pair कैसे पता चलता है? आप उसके periodic table से last shell में देखते हो, group number देखते हो. So in the case of oxygen that is 6. फिर आप देखते हो कि bonds कितनी हैं. So 2 bonds हैं तो 6 minus 2 कि 2 electrons bonded हैं और बाकी 4 electrons not bonded हैं. So that is lone pair. So that is how you make covalent bond, why they make covalent bond, the different ways of writing the formulas, the different ways of drawing it, जैसे dot and cross है, Louis diagram है, or formula itself है. Okay. Now there are a few compounds in your syllabus या a few molecules in your syllabus जिनका structure आपको बनाना आना चाहिए. I want you to sorry. I want you to look their structures up, try to understand कि वो structure कैसे बनते हैं, and I will send you a video on how those structures are या उनको कैसे बनाया जा सकता है. Okay, so that's a private learning experience that everyone should have ताकि आपको वो diagrams बनानी आए. So I'm going to list them for you and I want you to go through them, work your way through them. So H2, Cl2, CO2, H2O, CH4, C2H4. So ये एग्जामिनर रिकमेंड करता है कि ये आपको आनी चाहिए. There are a few that I also recommend कि आपको ये भी जरूर आने चाहिए. One of those is HCN.
ठीक है, ये मॉलिक्यूल सिलेबस में उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर वो आ जाए तो आपको आना चाहिए. सिमिलरली देयर इज वन मोर विच इज ऑल्सो इन द सिलेबस बाय द वे, HCl. ये भी आपको आना चाहिए. देन देयर इज NH3, एंड देयर इज वन दैट आई वुड रिकमेंड, जो हम क्लास में भी बाद में करेंगे, दैट इज NH4 प्लस. ये पहला ऐसा आयन है, मॉलिक्यूल है जिस पे चार्ज है, और इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयंस, या जिसको हम पोली एटॉमिक आयन भी बोलते हैं. ये मॉलिक्यूल है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, बट साथ ही साथ इसमें चार्ज भी है. ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड with charge on it. So this is a special case of this. There are 6 of these in your syllabus as well. मैं वो भी आपको लिस्ट कर देता हूँ. आपको इनकी diagrams आनी चाहिए. So you need to be able to draw the dot and cross, and you need to be able to draw the Louis diagram for these. But बाकियों के आपको name, formula और charge याद करना है. Let me list those for you. So these are 7 ions or 7 molecular ions that I want you to memorize with charges, with formulas. इनके नाम भी. So नाम इनके बहुत सिंपल से हैं. You might have seen them before. Hydroxide, nitrate, sulfate. एग्जाम में F के साथ वो लिखेगा, बट अगर आप PH के साथ भी लिख दें तो दैट्स फाइन, मार्क्स नहीं काटेगा. सल्फाइट, ये रिसेंटली सिलेबस में ऐड हुआ. फॉस्फेट, carbonate, and ammonium. All of these, one important point to remember, all of these have covalent bond but make ionic bond, which means कि अगर कभी भी किसी compound में ये होंगे तो उस compound में दोनों bonds होंगी, covalent भी होगी, ionic भी होगी. और MCQs में वो ये पूछ सकता है कि which of these compounds has both covalent and ionic bond. तो you have to know कि जिसमें इस तरह में से कोई भी आयन आ जाएगा, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कुछ भी है, इट विल हैव बोथ ऑफ दोज बॉन्ड्स. वन एक्सेप्शन भी उसमें होती है, एसिड्स, क्योंकि एसिड्स में ये बॉन्ड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, जो कि नॉन मेटल है. मेटल के साथ जब भी ये बनाएंगे तो ये कोवेलेंट एंड आयनिक दोनों होंगी इसके अंदर. ऑलराइट, सो this is the list that I want you to focus on, and yeah, that is it for today.